I guess you can see my screen, right? Yes. Yes. Okay. So yesterday what we have seen, we have just started the concept of interface, right? Okay. So how that interface in syntax is different from abstraction? Like first thing, while giving the class name, right? Before the class, I was using the word abstract in case of abstraction, right? Here we are using the word interface, okay? We are using the word interface. Next, again the similarity, like here in abstract class, at least one method should be abstract. But here in interface, like all methods by default are abstract methods. Okay? And the difference here, we cannot create the object of this abstract class. That's why we are going to inherit, means we are going to extend that into the next class, in which we are going to make the this abstract method as a concrete method. Similarly here, instead of extends, we are using the keyword as a implements. Okay, implements and the interface name. Okay, so we like yesterday we have just seen the syntax. Okay, the syntax for the WebDriver. Okay, now there may be the confusion. Just wait, I will clear all the confusion between this abstract and the interface. Is that okay? Yes, sir. Okay. 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 Let me clear one class. Chrome driver. Okay. Example, I'm making one class as a Chrome driver. Okay. So what we are seeing the concept here of interface. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, as I told you, while creating the interface, we have to use the keyword as interface. So I'm using the keyword interface. You can give any name to interface, okay? Whatever the name you want, just like a class, we can give it. So here, consider I'm giving as a WebDriver. Okay. Now I want to give the methods, right? Methods which are by default what? Abstract method. Okay. So I'm giving as a public void, sorry, open app consider there is one method open application. Okay, again I'm not specifying any body, that means this is the abstract method. Okay, again next method if I want to put is like close app. Okay, okay, we defined the two methods. Okay, in this interface of name WebDriver, I have two abstract methods: open app, that is open application, and close application. Okay, these two methods I am giving in this interface. Okay, now as we know, we have to implement these methods, or we have to give the statement or code for the respective abstract method in the next class. Okay, in the next class. So consider here I'm making one class as Firefox. I'm making one class as a Firefox. Okay, now in this class I want to make, give me a minute. Can you hear me? Yes. Okay, so see,
This is the interface which we have created. In that there are two abstract methods. Now I want to make these methods concrete, or I have to give the implementation for this method in the next class. So for that reason I have created a class name with the Firefox. Okay, you can give any name. Okay, now how to make that abstract method as a concrete? Public void, what is the method name which we are using it? As open app. Consider. Okay, now this is the method. Now I want to give the statement. So what I can give, I just want to print as uh, Firefox open. Okay, just that implementation I want to give. So in this method open app, which belong to Firefox class, I'm going to make it complete, or I'm just giving its body. Okay, similarly next public void, next method is the close app. Okay, again similarly for this method I am going to make it complete or give its implementation in this class. Okay, Firefox class. So just for implementation I am giving as a close. Okay, I'm giving as a Firefox close. Okay, so we have created interface, we have created a class in which I want to complete this method. Okay, okay, okay. Now to execute, what we want exactly? To execute a code, what we required? Main The method. main method. Okay, definitely we are going to put the main method in this class, Chrome driver. Okay, why? Because this is a public class and which we have created this class as a initially. Okay, but here the concept is whatever the method in the interface that we can use or access as many as class you want. Okay, for example here is one class. Again I want to use this method in the Firefox class as well. So what I will do, I will just use this method. So instead of Firefox I can say as a Chrome. Okay, same method name is same, I'm just changing the implementation, right, as per the class. Okay, okay. Now we know we require the main method for the execution, right? Main method. So what is the syntax? Public static void main string args. Okay, okay. So we are in the main method now. Okay, now I want to access these methods from this Firefox class or from this Chrome class. So what I need to do? What I should do? Create an object, sir. Create an object. Okay, we will create an object for this class. Consider. Okay, we are in main method. Is it to new keyword? Again the class name. Okay, we have created the object for this Firefox class. Okay, now this is the variable and I want to use the method as, for example, open app, right? You can see here the open application method from the Firefox itself. Okay, again I want to call the second method as well, the close app. Okay, now just see the code carefully and let me know, is that code will run fine or it will give an error? Sir, it will just it will give error, sir. It will give error. Okay, again
Any guesses? It will run or it will give an error? Okay, sir, we will try and then we will show or we will get what exactly happening. Okay, we'll try. Okay. So we have to run this. We are getting output. So what error you were expecting? Sir, we have not used the inheritance. Okay, we have not done the inheritance. Okay. Okay, so you want me to inherit, right? Okay. So here, what we need to put here? Keyword as a Extend. is that we can extend the interface. What I told you. Which keyword we have to use for the interface? Implement. Implements. Okay, not this extend. So here in Firefox class example, you want to implements, right? Implements the web driver, the name of the this interface. Okay, web driver. Okay. Now code finds. If I will run this code, what the output I will get now? Same output. Same output. Okay. No error. You are guessing, right? Okay. Then what is the use of this interface? We have created the interface. We have implements that as well, right? In the Firefox class. Okay, you want me to call the second these methods as well from the Chrome driver? Is that it will make any difference? Interact, guys. Then only will understand the concept. Otherwise, there is no use. You will get having confusion till end. What should be there? इंटरफेस है फिर भी सेम आउटपुट. इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया फिर भी सेम आउटपुट. यस. Okay, I made the object for the Chrome driver as well, and I called this method. Okay, I'm getting that implementation as well. Okay, what is the use of this interface here? Okay, for now a while I will not implement this. Consider. Okay, and even I'm not going to use this. Will I get any error for this code as well? No, sir. Okay, I will try. Still we are getting the output without using interface as well. Again I put that interface again. Okay, so what is happening here? I'm using interface, still same output. I'm not using interface, still same output. I'm trying to implement it, still same output. Any guess what is happening here? Okay, now listen carefully. Okay, this is the concept I want to make you very comfortable. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Okay, we are doing which course here? Automation testing. Automation testing or software testing, right? What is the aim of doing this course for you?
So to get the job, To get the job. Okay. To get the job. I understand. Okay. So to get the job after like completing this course, what you need to do? Gives the interview. Okay. You need to give the interviews. Okay. 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 I accept. You join this session to get a job, and to get a job you need interview to appear the interview, right? Okay. Got it. Now take very simple example, okay? So while giving an interview in your mailbox, you got one mail as a walk-in drive. You know, right? What is walk-in drive? yes, sir. Okay. What is walk-in drive? So in the company, we can directly go and give the interview. Good. So if you go on through this mail, you will get like a company has invited you, okay, just directly to their company for the interview purpose. So directly walk in. Directly walk in means you just got an email and you are going to the company to appear for an interview. Okay. Okay. At the same time, you got another one mail. Okay. That is referral walk-in drive. Okay. So what is the difference between this walk-in drive and referral walk-in drive? Mm-hmm. So What is the someone difference? has referred, Hmm? since the employer of the company has given the HR the reference of me To to you take the or interview. yeah, very good. See, in walk-in drive, you are directly going to the interview, right? But here in referral walk-in, any employee, is that again only one employee can refer you? No, so many employees can refer. Many employees. If he is working in that organization, definitely he is going to what? Refer you, right? So this is the concept just to understand, okay? See, you want a job. For the job, you need to appear for the interviews. And again, there are two types. For example, the one is walk-in drive, where you can go directly, right? Where you can go directly. It's just showing like you can go directly to the organization for the interview. And here with the help of reference you are going, right? Here with the help of reference you are going. Same concept, okay? It's very easy to understand. ये concept आपको easy लगा होगा. Now just listen carefully. The same concept I will tell you, okay? Okay. Now, what is the objective of here of learning the Selenium is simply we have to perform some actions, right? Whatever the test cases you have written in the manual way, you just need to perform those in terms of the actions. So consider my aim here is to make action. Okay. Okay. How we can do the action? How we can do the action? So writing the codes. Code, okay, that we are doing in the class as well, right? Int a is equal to 20. It's also code. Is it going to perform any action? No, sir. So what we have seen the three concept, right? Class, method, object, right? We have to use the method. Good. We have to use the method. Okay. Now we are using the method to perform a specific operation or action. Okay. Now this method can be available in class, right? Yes or no? Yes. Yes, sir. That method can be available in class, or if required, that method may be in interface also. That method may be in interface also. We don't know, right? It may be in class, it may be in interface. Okay, just like this.
It may be in class or it may be in interface. Okay. Now, how we can access the method by using the class? By creating object. Very good. We can create an object, right? We can create the object. That means directly we are going to create an object of the class and accessing the method and performing the action. We are solving our purpose. But if it is in the interface, how we are going to do it? Can we make an object of interface? No, right? At the starting only I told you that we cannot make an Yes. object of the interface. We cannot make the object of the interface. So listen carefully the concept. As in referral walk-in drive, you have taken the reference from some employees, right? You have taken the reference from some employee. Similarly, if that method is in interface, we cannot create an object. That doesn't mean we cannot perform action by using the specific method present in that interface. So here the concept is we need to take the reference of this class. We need to take the reference of the class in which that method is present. Okay. Again, it will make some confusion, but I will make it clear very easily. Okay. देखिए, interface का मैं object नहीं बना सकता हूँ, so I will take some reference of the class. Okay. Then I'm going to make it object. अब उसका object बनेगा. मैं class का reference ले रहा हूँ तो class का object बन सकता है. I'm going to make an object and then I'm going to use this method. But directly interface के लिए हम object नहीं बना सकते. Directly for the interface I cannot create an object, but I can take a reference of class. Definitely for a class I can make an object. Okay. Just see this concept. इसमें किसी को कोई doubt है? Just by giving an example I am trying to explain this. इसमें किसी को कोई doubt है? No, sir. No. Now come back to the code. Come back to the code again. Okay. Here what we have done is in the main method we have created object for which class? Firefox class. Okay, which we have created. Again we have created object for the Chrome driver. Right? Okay. We will try to create an object for the interface. So what is the name of the interface? Web driver here. है ना? मैंने web driver नाम दिया ना? देखिए line number 2 में web driver interface. Web driver is equal to give any variable. For example, I'm trying to give the variable name as a driver. Okay. Then new. Again I will give the same name. It is giving an error. Why? Because we know we cannot create object for the interface. Okay. No issue. But I told you we can take a reference of class. We can take a reference of a class and create an object. So instead of web driver, can I create Firefox? Can I take the reference of Firefox? Yes, right? It is not giving an error. Okay. Now I will try to call the methods. Okay. By using this object created driver. Okay. Now if I will click, I will put a dot here, it will show you the method, right? For example, open. See, open app, it's one of the method. From which it is going to refer? See, it is going to refer from the web driver. It is going to refer from the web driver only, not from the class. Because we have created object for the web driver, but by taking the reference of which class? Firefox class, and we have already implemented, that's why it is coming from the web driver. Okay, it is coming from the web driver. Okay, you can see the concept here as well. Okay, see, here I have created the object for Firefox. Now I want to use the method open app. See, it is coming from the Firefox class, not from the interface. Are you getting the concept?
Here, this method is coming from the Firefox class, not from the interface, WebDriver interface. Okay, but here by we want to call the methods from the Firefox. So see, definitely we can call it. Okay, like see open app, but it is coming from the WebDriver. It is coming from the WebDriver. Okay, similarly driver dot close. See, close app, again it is coming from the WebDriver only. Now if I will try to run this code, again the code will run fine, no error. See, we are getting Firefox open, Firefox close. Similarly, if I want to use the method from the Chrome driver, so what I need to do is WebDriver, again any other variable name as a driver1 is equal to new. Now this time I'm going to take the reference from this class, Chrome driver. Okay, again as per the syntax, done. Driver1 new. Okay, wait, even we can get this method as well. Sir, you should implement your use. Yeah, sorry, yeah, we can implement here as well. Sorry, simply we have to implement this as well. Yeah, now we have created another object by taking the reference of this Chrome driver. Now I can again calling that same method from the Chrome driver. This time I'm sorry. Now see, I want to use the open app method. Again it is going to refer you the interface only. It is going to refer you the interface, not the class. For example, if you want to cross verify here, for example in line number 31, we have created the object for Chrome driver. Okay, and the reference variable is ch. So if I will try to open or use the method open app, it is showing you from the class itself, not from the WebDriver. Okay, so here again if I will run this code, you will get its method implemented like Chrome open. जस्ट टेल मी कि आपको कोड में कोई डाउट है? आपको है डाउट, मुझे पता है, बट इन कोड यू हैव एनी डाउट? No, sir. Yes, no. No, sir. कोड में कोई डाउट नहीं. ओके, now ask your doubt with respect to abstract or with respect to this interface. अब आपके डाउट होंगे बहुत सारे. Even we got the doubt yesterday also, but कोई आपके डाउट है? How it is different from this abstract, right? The doubt from the yesterday session. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Now listen carefully. Okay. Now listen carefully. See, when we are using the abstraction to hide the data, okay, how we are hiding the data? For example, I told you in abstract class, at least one method should be abstract. है ना, जिसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन आपको शो नहीं करना है. ओके, बट द रिमेनिंग इम्प्लीमेंटेशन आई कैन शो यू. आई कैन गिव एटलीस्ट वन और मोर देन वन कॉन्क्रीट मेथड एज वेल, जिसका इम्प्लीमेंटेशन उसमें है. बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए योर एटीएम. फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू द एटीएम, you can see your balance only, or you can see your information only, right? User information. For example, there is one method, for example, user information. Definitely it should be abstract. Why? Because
उसकी इंफॉर्मेशन वो कैसे उसने डिस्प्ले की है उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं बताया जाएगा, बस आपको आपकी यूजर इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे दिखेगी, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड से उसको कभी तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया होगा इन अनदर नेक्स्ट क्लास, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग योर बैलेंस इन दिस स्क्रीन, ओके। सो दैट वाज प्योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और आपको क्या हुआ कि बस उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा है। और मान लीजिए कुछ अलग चीजें हैं जैसे कि शो योर एड्रेस और समथिंग, जो आपका इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा रहा है। फॉर दैट मेथड यू कैन सी द इम्प्लीमेंटेशन, ओके। जहां पे हमको कुछ हाइड करना है और कुछ चीजें बतानी है क्लियरली, दैट टाइम आई एम यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट सिंपल। some part we are trying to hide and some part we are trying to give the implementation, तो हम तब abstract यूज करते हैं। फिर से हम इंटरफेस कब यूज करते हैं। I told you interface is acting as a plan, and in interface all methods are by default abstract, मतलब आपको इंटरफेस में तो कभी इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा ही नहीं। you will not get the implementation in the interface, you have to create individual class to implement that, you have to create an individual class to implement it, okay। now take the same example, WebDriver is an interface, जो हम सेलेनियम में WebDriver देख रहे हैं, that is an interface। अब WebDriver का यूज करके हम अपने एक्शंस Firefox में भी कर सकते हैं, we can make it in Chrome as well और in different browser। so हर ब्राउजर के लिए क्लास होगा और उस क्लास में इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकता है, right। the implementation may be the different in each and every class, so for that reason even we are following this syntax, okay। देखिए यही सिंटैक्स मैं बाद में भी यूज करूंगा प्रोग्राम में, ओके। अगेन इसका मीनिंग थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए फ्रॉम दिस सेलेनियम आर्किटेक्चर। दिस इज अ स्टैंडर्ड इंट्रो क्वेश्चन and you should be in a position to explain this very cool, okay। देखिए they will ask you what is the selenium architecture or selenium hierarchy, okay। so in selenium, okay, we have the top most interface। देखिए कि इंटरफेस है, जैसे मैं अभी तक वेब ड्राइवर एक इंटरफेस बनाए थे, वैसे ही सर्च कॉन्टेक्स्ट नाम का एक इंटरफेस है। दैट मीन्स उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगी, मुझे नहीं पता वो क्या है, समझ लीजिए, ओके, नो इशू। सिमिलरली आपके पास अभी हमने जैसे बनाया वेब ड्राइवर, वैसे वेब ड्राइवर इंटरफेस क्रिएटेड है सेलेनियम से, ओके। मान लीजिए नाउ बिटवीन दिस टू इंटरफेस वी कैन एक्सटेंड, मतलब मैं अगर इस वेब ड्राइवर इंटरफेस को एक्सटेंड करना चाहूंगा इसमें, मतलब ये हुआ आपका पेरेंट, ये हुआ आपका चाइल्ड। व्हेन आई ट्राई टू एक्सटेंड दिस सर्च कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस, इंटरफेस टू इंटरफेस आप एक्सटेंड कर सकते हो, ओके, यू कैन यूज द कीवर्ड एक्सटेंड्स। तो क्या हो जाएगा, वेब ड्राइवर में इसके सभी जो मेथड है वो आ जाएंगे। स्टिल इट इज इन एब्स्ट्रैक्ट वे ओनली, बोथ आर इंटरफेस, कोई कॉन्क्रीट मेथड नहीं यहाँ पे, बस मैंने एक्सटेंड किया तो इस मेथड के सभी मेथड इसमें आ गए चाइल्ड क्लास में, ओके। गोइंग फॉरवर्ड मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ रिमोट वेब ड्राइवर नाम का, ओके, मान लीजिए, एंड सी फॉर द क्लास, in that class what I will do, I will give the implementation of all the method which are available in WebDriver, and because of the extent search context के भी मेथड यहाँ पर आ जाएंगे, सर्च कॉन्टेक्स्ट के भी मेथड यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ वेब ड्राइवर ये मेरा इंटरफेस है, एंड वी आर हैविंग द डिफरेंट क्लासेस, मतलब देखिए रिमोट ड्राइवर में भी चाइल्ड क्लासेस कौन से है, फायरफॉक्स, क्रोम ड्राइवर, आई ड्राइवर, सफारी ड्राइवर, वट एवर द मल्टीपल ड्राइवर्स एज पर द ब्राउजर। नाउ if I want to use all the methods from this WebDriver interface, then I will create object like WebDriver, any reference variable name, for example driver, but I will take the reference of any one class. That class may be this Firefox, that class may be this Chrome driver, that class may be iDriver, okay. Same we have done here in line number 33. This is your interface. I am giving a reference name, variable name, but this time it is going to refer the class, okay, not the WebDriver itself, because we cannot create the object. तो मैं कोई क्लास को रेफर करूंगा, so I was taking the reference of Firefox class. तो ये जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ड्राइवर, then I can use any action in the Firefox driver or in the Firefox browser, we can say, right.
जब मैं driver 1 नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, so I can work with the Chrome driver और in Chrome browser I can perform any action. Because इसका क्लास अलग है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इस मेथड में अलग है. See, in this not in this method, in this class Chrome driver, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी हो सकता है, राइट? इवन आई कैन प्रिंट सम मोर स्टेटमेंट हियर. सो आपका इम्प्लीमेंटेशन तो डिफर हुआ फ्रॉम दिस फायरफॉक्स क्लास और इस क्रोम ड्राइवर क्लास में डिफरेंस हुआ. बट एट द एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस इन बोथ क्लास. सिमिलरली इस डायग्राम में वही है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिमोट वेब ड्राइवर है, ये इसको कहते हैं कंप्लीटली कॉन्क्रीट क्लास. इसमें जितने भी मेथड थे आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये दोनों इंटरफेस में, वो यहाँ पे क्या बने हैं, कॉन्क्रीट बने, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन दिया है. एंड जस्ट बाय यूजिंग द इनहेरिटेंस मींस एक्सटेंड कॉन्सेप्ट, मैं इंडिविजुअल ड्राइवर से काम कर रहा हूँ. ओके, इंडिविजुअल ड्राइवर से काम कर रहा हूँ. अगेन जस्ट अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, अगेन इट विल गिव सम क्लैरिटी, आई होप. सी, सर्च कॉन्टेक्स्ट इज द टॉप मोस्ट इंटरफेस, है ना. अब इसमें बस दो ही मेथड है, फाइंड एलिमेंट एंड फाइल एलिमेंट्स. ये मेथड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं पता. ओके, अगेन वेब ड्राइवर नाम का एक इंटरफेस है जिसमें मान लीजिए अपने पास और कुछ मेथड बढ़ गए, गेट, क्लोज, क्विट, है ना. ये जो मेथड है, इसे आपको ब्राउजर क्लोज करना है तो कोई मेथड होगी, सो वो क्लोज मेथड है मान लीजिए. नाउ बोथ दीज इंटरफेसेस, येलो जो है वो इंटरफेस है. नाउ दिस वेब ड्राइवर विल एक्सटेंड दिस सर्च कॉन्टेक्स्ट. तो मतलब वेब ड्राइवर के चाइल्ड क्लास में इसके भी मेथड आ गए. Okay, done. Now we have created one class, remote web driver. Generally it is a web driver, but remote web driver कब use करते हैं, when we want to use remotely, जैसे मुझे ग्रिड पे काम करना है तब. As of now you just understand the remote web driver एक क्लास बना है जिसमें सभी मेथड, ये जो मेथड है अभी, फाइंड एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट्स, गेट, क्लोज, क्विट, इन सभी को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया. इम्प्लीमेंट मतलब क्या कर दिया, I have provided the body और given the implementation कि भाई इस मेथड को आप कैसे इम्प्लीमेंट करना है. ओके, now this is the class. now as we are working on the different browser, तो different browser के लिए भी मैंने क्लास बना ली है. मान लीजिए I am having the classes, okay, fire like Chrome driver, Firefox driver. अब ये ड्राइवर मतलब मैंने इनको क्लास को नाम दिया, राइट. दिस इज a simple the class, blue color is referring to the class. Now this class is simply can extend this remote web driver class. तो मतलब देखिए मुझे काम तो करना है फाइंड एलिमेंट के साथ, बट मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, राइट. मुझे सर्च कॉन्टेक्स्ट इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाने का परमिशन नहीं है. सो आई विल रेफर सम क्लास. रेफर सम क्लास मीन्स व्हाट, दिस रिमोट वेब ड्राइवर, और सिंपली मुझे वेब क्रोम ड्राइवर के साथ काम करना है तो मैं ये क्रोम ड्राइवर को क्लास को रेफर करता हूँ. The same with what we are doing here. He web driver, sorry, not here, here. Interface का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, right? Okay, I have just created the object, but I am referring to some class with which I want to work. मान लीजिए मुझे लाइन नंबर 35, 36 में उस क्लास के साथ काम करना है. That's why I am referring that class. Okay, you cannot call the method from driver, और वो जो method present होगी कहाँ पर, अदर क्लास में. देखिए जब आपने क्रोम ड्राइवर कहा है तो क्रोम ड्राइवर क्लास में जितने भी मेथड कॉन्क्रीट बने हैं, ओके, कॉन्क्रीट बने हैं, जैसे कि ओपन एप्लीकेशन, क्लोज एप्लीकेशन, इनको मैं यूज कर सकता हूँ. सिमिलरली जब मैं फायरफॉक्स का ड्राइवर ये कीवर्ड यूज कर रहा हूँ तो फायरफॉक्स में जो भी मेथड है ना, दिस इज ओपन एप्लीकेशन और दिस क्लोज एप्लीकेशन, मैं इसको यूज कर सकता हूँ. डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं? Are you getting what exactly happening here? Yes, sir. Okay. Now, what is the definition of selenium? मैंने पहले बताया था definition क्या है. What is selenium exactly? How will you explain? What is selenium? Selenium is one type of API. API. What is the full form of API? Application Programming Interface. What is the last word? Interface, right? Interface, yes. That's it. So web driver is an interface, hence it is proved, right? Web driver is an interface. Okay. अब
हमको डायरेक्टली इंटरफेस से काम करना था, तो हमने क्लासेस वगैरह ये क्यों बनाए? सी सेलेनियम इज अ एपीआई विच विल वर्क। अब एपीआई है तो उसको सर्वर और क्लाइंट चाहिए। डेफिनेटली सर, क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट तो जाएगा नहीं जब आप इंटरफेस की बात करोगे तो, और एपीआई की बात करोगे तो जब हम वेब ड्राइवर से काम कर रहे हैं, मतलब सेलेनियम वेब ड्राइवर से, तो हमारे लिए क्लाइंट कौन हुआ? कहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे? इन आईडी, राइट? इक्लिप्स, Yes. we are giving the instruction. It is dealing with the server means यहाँ पे सर्वर कौन होगा? अगेन द ब्राउजर। हम किसी ब्राउजर से काम कर रहे हैं ना, मान लीजिए फायरफॉक्स, क्रोम और आईडी और सफारी जो भी है ना। तो वेब ड्राइवर क्या करता है? सेलेनियम इट्स अ मीन और एपीआई बिटवीन दिस टू लेयर्स। टू लेयर्स मतलब क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट यहाँ पे आपका इटसेल्फ the ID जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, यू आर गिविंग सम रिक्वेस्ट एंड यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स ऑन दी ब्राउजर। आप जो क्लिक करोगे, जैसे आपने कोड में कहा क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्लिक, जो भी है आपके ब्राउजर में, वॉट एवर द ब्राउजर यू आर यूजिंग। ओके, दैट मीन्स द सेम कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर कि एपीआई बस क्या कर रहा है? इट्स ट्राइंग टू वर्क और इट इज मीडिएटर बिटवीन द टू थिंग्स। Like one is your ID जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो एज अ क्लाइंट, एंड वन थिंग एज योर ब्राउजर। ओके, अब ये कंसेप्ट भी क्यों आया समझ लीजिए। देखो, इंटरफेस में जो भी कोड है, ओके, जो भी कोड है या वेब ड्राइवर में जो भी कोड है, वो डायरेक्टली आपके ब्राउजर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ब्राउजर परमिशन नहीं देगा किसी थर्ड टूल को कि उसका जितना भी इम्प्लीमेंटेशन वो देख पाए, राइट? सो इट विल जस्ट गिविंग द एक्सेस थ्रू द ड्राइवर। जो हम ड्राइवर यूज करेंगे, फायरफॉक्स ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डील और जस्ट मेक अ कम्युनिकेशन विथ योर ब्राउजर थ्रू आईडी। आईडी में मैं जो भी दूंगा इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि मान लीजिए क्रोम ड्राइवर में मुझे कुछ एप्लीकेशन ओपन करना है, तो ये इस मेथड में मैं मेरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन दूंगा कि मुझे ओपन करने के लिए क्या चाहिए, वॉट एवर द कोड, वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन आई विल गिव देयर, एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। वो नहीं पूछेगा कि क्रोम ड्राइवर का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब क्रोम ब्राउजर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने क्लास है, वो नहीं पूछेगा। इट विल डायरेक्टली इम्प्लीमेंट, बिकॉज मैंने क्रोम ड्राइवर के क्लास जो ऑलरेडी बना हुआ था, ये ऑलरेडी बने होते हैं, ओके, ड्राइवर क्लासेस। अब ये ड्राइवर क्लासेस बने, तो आपने कहा कि हमने तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी बनाया, तो ये जो ऑलरेडी क्रिएटेड ड्राइवर है ना, इसी को हमको डाउनलोड करना पड़ता है। मतलब आपको अगेन वो क्लास बनाने की जरूरत नहीं है ना, विच वी आर टॉकिंग अबाउट दीज क्लासेस। ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस मैं नहीं बनाऊंगा अभी खुद, दीज आर स्टैंडर्ड क्लासेस, और इसको बस हम जार फाइल से इंपोर्ट करेंगे। मतलब डायरेक्टली कुछ फाइल रहेगा, फाइल को हमको बस यहाँ पे पुट करना है, एंड डायरेक्टली उसकी क्लास बन जाएंगे उस फाइल से। अब मैं नेक्स्ट उसका रेफरेंस देके तुरंत वेब ड्राइवर के साथ काम करूंगा। अगेन ऑल दीज इंटरफेस विल बी आल्सो अवेलेबल। ये सब सिस्टम जनरेटेड है, ये कोई मैं मैन्युअली नहीं बना रहा हूँ। दो वी हैव ट्राइड टू क्रिएट हियर मैन्युअली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस होगा, उसके साथ काम करना है तो हमको कुछ क्लास लगेंगे, बिकॉज इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे क्लास में करना पड़ेगा, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेके मैं उस इंटरफेस के जितने भी मेथड है उसको सभी को मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। Doubt clear between the interface and abstract? Okay, now the question you can come across कि मैं interface use नहीं करता तो क्या होगा? What will happen? Simply we have seen in this code as well, right? Interface मैंने use ही नहीं किया था, तो क्या हो रहा था? सर कोड रन कर रहा था। कोड तो रन करेगा डेफिनेटली, बट व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली कि मुझे इस क्लास में इंप्लीमेंट क्या करना है मुझे नहीं पता चलेगा ना। देयर इज नो एनी प्लान, मुझे एग्जीक्यूशन करना है, मैं रैंडमली करता रहा हूँ। मैं कभी पहले क्लोज कर रहा हूँ एप्लीकेशन, फिर ओपन कर रहा हूँ, फिर ओपन करने के लिए क्या चाहिए मुझे पता नहीं है ना, गाइडलाइन मुझे पता नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे ओपन और क्लोज सीक्वेंस दिया है मान लीजिए, सो आई नीड टू इम्प्लीमेंट दैट सीक्वेंस एज वेल। और यहाँ पे जो भी मैंने मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है उसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन मैं अलग अलग क्लास में दे सकता हूँ। एंड इट इज नॉट लाइक कि हम वन टाइम में मल्टीपल ब्राउजर के साथ काम करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द क्रोम ब्राउजर, सो इतने सब क्लास बनाने की जरूरत है ही नहीं ना। आई विल जस्ट मेक वन क्लास
अब ये क्लास बनाने की जरूरत मुझे वैसे भी नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम दी जार फाइल्स। जब मैं ड्राइवर्स डाउनलोड करूंगा, है ना, जार फाइल्स, उसको कॉम्बिनेशन करूंगा, तो अल्टीमेटली आई कैन मेक अ कनेक्शन बिटवीन दिस फायरफॉक्स एंड दिस वेब ड्राइवर। Any Chrome driver, if I want to work with the Chrome, I will make a connection between this Chrome driver. I will download these drivers and I will use with the interface, WebDriver interface. Got it? इसमें कोई डाउट है? Yeah, if you have any doubt, just ask me. I will tell you how it again it is different from the abstract. देखिए abstract में मेरा aim अलग था, data hiding था। abstract में मुझे क्या करना था, कुछ चीजें हाइड करनी थी यूजर के लिए और कुछ चीजें बतानी थी विथ इम्प्लीमेंटेशन। नो वरीज। बट हियर इन इनहेरिटेंस माय एम इज डिफरेंट। एम क्या है कि इनहेरिटेंस में वेब अपने इंटरफेस में जितने भी मेथड्स है उसको मैं करूंगा कॉन्क्रीट का यहाँ करूंगा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन किसी और क्लास में, और अगर मुझे उस क्लास के साथ काम करना है तो मैं उसी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। आई विल जस्ट टेक अ रेफरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो मैं वेब ड्राइवर का ही बना रहा हूँ, बट आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ दिस क्लास। जिस क्लास के साथ मुझे काम करना है। अब क्लास मतलब दीज आर द क्लासेस। सी फायरफॉक्स भी एक क्लास है, क्रोम ड्राइवर भी क्लास है। अब इस क्लास में क्या कोड लिखा है, अगेन आई एम नॉट गेट वरीड, ओके। इस क्लास में मेथड के लिए बहुत सारी कोडिंग होगी दोस्तों। अब तो अगर देखोगे ना सोर्स कोड इनका, तो इसमें बहुत सारी कोडिंग है, लेंदी कोडिंग। बट आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस। मुझे क्या करना है, क्रिएट, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और आई कैन यूज ऑल मेथड फ्रॉम दिस क्रोम ड्राइवर, है ना। मेथड का इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं जानना है, वो ऑलरेडी उन्होंने कोड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे बनाया रखा है। बस मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये सब दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मैं वेब ड्राइवर मतलब इंटरफेस का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता हूँ। सो मैंने बस उसको रेफरेंस लिया किसी क्लास के तौर पे, बिकॉज क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या रेफरेंस ले सकते हैं। सो आई हैव जस्ट टेकन द रेफरेंस ऑफ द क्रोम ड्राइवर। अब इस क्लास में जितने भी मेथड है उन सभी के साथ में काम कर सकता हूँ। वाई? बिकॉज ये क्लास ने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। यू कैन सी द प्रूफ। आप बोल सकते हो कि जो वेब ड्राइवर में मेथड है वो क्रोम ड्राइवर में अवेलेबल है क्या? डेफिनेटली। इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर, देखिए सर्च कॉन्टेक्स्ट के जितने भी मेथड है वो सब एक्सटेंड करके वेब ड्राइवर में आ गए। इंटरफेस टू इंटरफेस आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब ये इंटरफेस है और ये क्लास है। अब क्लास में अगर आपको वेब ड्राइवर के सभी मेथड चाहिए होंगे तो आपको करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट जैसे करते हो तो यहाँ पर सभी मेथड को आपको कॉन्क्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास में आ चुके हो। अब क्लास में अगर मेथड है तो सिंपली मैं इनहेरिटेंस यूज कर रहा हूँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, कि यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास है फायरफॉक्स, ये इसको एक्सटेंड कर रहा है तो इसकी सभी मेथड इसमें आ गई। मैं इससे काम कर सकता हूँ। देखिए फ्लो कहाँ से आया, फ्रॉम द टॉप टू दिस इंडिविजुअल ब्राउजर। गॉट इट? आई होप इट्स क्लियर, राइट? बट सर बोलिए। क्लास में मेथड का इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा? ओके, यू आर आस्किंग कि यहाँ पे बनाना है, इसी का ऑब्जेक्ट लिया हमने, करेक्ट? वी आर जस्ट यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, ये मेथड बोल रहे हो आप, राइट? यस। ओके, नाउ सी, ये कब पॉसिबल है? जब मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ तो इट बिकम सेम प्लेन क्लास, राइट? तो इसमें आप मेथड में कुछ भी इम्प्लीमेंट दे सकते हो ना। इट्स नॉट डीलिंग विथ एनी इंटरफेस। यहाँ पे मैं 2 नहीं, यहाँ पे 10 मेथड भी दे सकता हूँ, कुछ एरर नहीं आएगा मुझे। यस। कैन यू एक्सपेक्ट एनी एरर इफ इट इज जस्ट प्लेन नॉर्मल क्लास? नो। बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, मतलब मैं किसी किसी इंटरफेस के मेथड को यहाँ पे कॉन्क्रीट बनाना चाहता हूँ। सिंपल, आप जो बोले ना वो कंसेप्ट क्या है कि मेरे पास कुछ प्लान नहीं है और मैं इंडिविजुअल अपना एग्जीक्यूशन करना चाहता हूँ। सिंपल, दैट्स व्हाई आई गिव द कंसेप्ट कि वेब ड्राइवर जो इंटरफेस है ये आपके लिए प्लान के टाइम काम करेगा। इट विल गिव द प्लान और अकॉर्डिंगली तब आप आपके इंडिविजुअल क्लास में आप उसको मेंटेन करोगे। अब आप बोल रहे हो कि मैं इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती हूँ, है ना, इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बस इसी का ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ। सो इट बिकम द सिंपल क्लास जो हमने अभी तक देखे थे कि आपने क्लास बनाए, कुछ मेथड बनाए, उसका ऑब्जेक्ट बनाए एंड यू आर ट्राइंग टू यूज और एक्सेस दैट मेथड्स। तो इसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना। क्यों नहीं रहेगी? तो क्या होगा, कल जाके
ये ब्राउजर जो है क्रोम ब्राउजर, ये अपने मेथड कुछ अलग ही बना देगा, ये कुछ अपने अलग मेथड बना देगा। ओके, देखिए मेथड तो सेम है, जब मैं आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो इंटरफेस से तो मेथड तो सेम होगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो सकता है। क्रोम ड्राइवर ने कुछ अलग कोड से उनका ब्राउजर ओपन करने का तरीका बनाया होगा, फायरफॉक्स ने कुछ अलग वे से बनाया होगा, बट ओपन तो सभी को करना है। और वो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये सर्च इंटरफेस, ये वेब ड्राइवर इंटरफेस। ओके, मतलब सेम एक्शन डिफरेंट तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे यस, डिफरेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट उनको कोई तो प्लान बता रहा है, वो बता रहा है इंटरफेस। अगर ये इंटरफेस ना हो तो आप क्या कह रहे हो कि सिंपल आप इंडिविजुअल क्लास बना रहे हो और वहां पे आप डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे हो, राइट? हैं। यस। बट यू विल नॉट गेट द यूनिफॉर्मिटी, और उनका इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे? इंडिविजुअल क्लास की स्टडी करोगे। सेलेनियम से काम करना है आपको, मान लीजिए, और आपने फायरफॉक्स का क्लास का स्टडी कर लिया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड यूज किए, बट इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू आर यूजिंग द क्रोम ड्राइवर। अगेन दैट टाइम यू नीड टू गो थ्रू ऑल द मेथड्स फ्रॉम दिस क्लास। कितने अवेलेबल क्लास है देखना पड़ेगा ना। यस। इसमें मान लीजिए 4 मेथड है, इसमें 3 ही मेथड है, और आपने वो एक्स्ट्रा मेथड कभी यूज की नहीं, यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। वाइस वर्सा, आपने यहाँ पे कम मेथड यूज किया और यहाँ पे आपको ज्यादा करनी है, अगेन यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड, राइट? सो Yes. इनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म पे प्लान देने के लिए वेब ड्राइवर को इंट्रोड्यूस किया है। वेब ड्राइवर मतलब इंटरफेस। अब ये इंटरफेस को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको सभी मेथड की यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, बट इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग किया होगा उन्होंने, बट प्लान तो एक है। देखिए अगेन कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा इंटरफेस। कॉमन प्लेटफॉर्म, राइट? इट विल गिव यू सम प्लान और सम गाइडलाइन लाइक दैट। ओके। बट यहाँ पे मेरा एम कुछ हाइड करना नहीं है और कुछ शो करना नहीं है। दैट वाज इन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में मेरा एम क्या था कि कुछ चीजें हाइड करनी है और कुछ चीजें शो करनी है। यहाँ पे कुछ हाइड करने का जरूरत नहीं मुझे, बस मैंने क्या दिया, फ्रीडम हर ब्राउजर को कि आप अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करो, बट मेथड का नाम तो मैं बता दूंगा आपको। इन वेब ड्राइवर इट विल ट्राई टू गिव यू द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स विच आर ट्राइंग टू परफॉर्म सम एक्शंस। अब वो एक्शन कैसे परफॉर्म करना है तो हर वेब ड्राइवर ने अपना अपना कोड लिखा होगा, है ना? फायरफॉक्स ने अपना कोड लिखा होगा, क्रोम ने अपना कोड लिखा होगा, बट इम्प्लीमेंट तो उनको सेम ही करना है चीजें। ओपन एप्लीकेशन करना है तो ओपन एप्लीकेशन ही करेंगे सभी लोग, बट मान लीजिए उनको ड्राइवर ने मतलब उनके डेवलपर ने उस मेथड के लिए कुछ अलग कोड लिखा होगा, बट एट द एंड आपको एक्शन तो एक ही करना है ना? फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन दिस, वी हैव मल्टीपल क्लासेस, है ना? उसमें मल्टीपल मेथड्स होंगे, बट एक्शन तो आपकी यूनिक ही होनी चाहिए ना। आपको जॉब तो एक ही चाहिए, आपको इंटरव्यू काफी मिलेंगे, कॉल्स काफी मिलेंगे, राइट? सिंपल है। एट द एंड मुझे एक्शन एक ही परफॉर्म करनी है, तो अलग अलग क्लास हो सकते हैं, मैं उनका ऑब्जेक्ट बना के उनको कॉल कर सकता हूँ। ओके ओके सर। स्टिल एनी डाउट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट एंड इंटरफेस? आई नो, अगर होंगे तो पूछिए। ये कल तक थे बट आज नहीं होने चाहिए आई गेस, बट स्टिल इफ यू हैव जस्ट लेट मी नो। No, sir. No. Is it clear? You should be easily explaining this as well. ये आपको इंटरव्यू में काफी इजी बताना पड़ेगा। देखिए अब ये डायग्राम में है, जैसे यहाँ पे दो इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट किया है इस क्लास में। अब ये रिमोट वेब ड्राइवर क्या है? फुली इम्प्लीमेंटेड क्लास। इसमें बहुत सारे इंटरफेस को कंप्लीट किया गया है, और एक जैसे हम मान लीजिए एक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, ये भी एक इंटरफेस है, इसमें भी कुछ मेथड होंगे एब्स्ट्रैक्ट। चलो उसको भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया इस क्लास में बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट। देखिए टेक स्क्रीनशॉट नाम का भी एक इंटरफेस है, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया इस रिमोट वेब ड्राइवर में। अब रिमोट वेब ड्राइवर का मैं क्या कर सकता हूँ, एक इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ चाइल्ड क्लासेस में, दीज आर द ड्राइवर्स, और इसको इसका ऑब्जेक्ट जैसे मैंने इसको रेफर करूंगा इंटरफेस को, आई विल ट्राई टू रेफर द क्लास क्रोम ड्राइवर, और उसके साथ काम कर सकता हूं मैं। जितने भी इस क्लास में जितने भी इम्प्लीमेंट किए गए मेथड है उन सभी को यूज करूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 मान लीजिए 4 इंटरफेस दिखाए, ऐसे मल्टीपल इंटरफेस होंगे जो इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं रिमोट वेब ड्राइवर। और आप कहीं पे देखोगे वेब ड्राइवर भी देखोगे, ओके, इट्स ऑल्सो सेम। देखिए वेब ड्राइवर एंड रिमोट वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है, रिमोट वेब ड्राइवर एक क्लास है।
है ना। रिमोट वेब ड्राइवर मतलब मुझे ग्रिड में काम करना है, मतलब अलग अलग नोड पे काम करना है, और आई कैन यूज ऑन सिंगल नोड आल्सो। सिंपल। आई होप इट्स क्लियर राइट टू ऑल। आपको बस ये डायग्राम सीधे से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके। और ये तभी कर पाओगे जब आपको इंटरफेस का कंसेप्ट पता है, इंटरफेस में होता क्या है एग्जैक्टली, है ना। हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट अ कॉन्क्रीट इन अ क्लास, हाउ वी कैन यूज दिस। ये कंसेप्ट भी काफी इजी है समझने के लिए, बट अगर ये नहीं समझ में आता है तो यू विल बी गेट कंफ्यूज। मेनी ऑफ द स्टूडेंट विल डायरेक्टली व्हाट वी कैन से मग अप दिस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट उनको पता नहीं चलता एग्जैक्टली क्या आ रहा है, बस याद रखेंगे ऐसे यूज करना है। दे डोंट नो द रीजन। The reason is this: we cannot create the object of the interface, but we can take the reference of the class. Simple. Okay. I hope it's clear for all, right? Yes. Okay. So if you don't have any doubt, we will stop here. Okay. Tomorrow again we will have session at the same time. Okay. Thank you.